हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। आप सभी का स्वागत है और आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक डैशबोर्ड का साइड बार। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मेरी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है। एक डिफॉल्ट HTML टेम्पलेट है जिसमें कि हमने अपने हेड में दो फाइल्स को लिंक कराया हुआ है, जिसमें एक है हमारा फॉन्ट आइकन्स के लिए एंड सेकेंड वन इज style.css, जिसमें अपने पूरे स्टाइल लिखेंगे। स्टार्टिंग में हम अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करके कुछ चीजें सेट कर लेते हैं। ये कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हेल्प करेंगी आगे। इट्स बेटर, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी यही है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके चलें। ओके, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हमें ये डैशबोर्ड हमारा दो पार्ट में रहेगा। एक होगा हमारा साइड बार एंड देन मेन कंटेंट। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी, साइड बार एंड देन मेन कंटेंट में दो पार्ट होंगे। इसमें एक हेडर होगा और उसके नीचे हमारा मेन कंटेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी ऐप क्रिएट करते हैं। अब इसके हम दो चाइल्ड रखेंगे, जिसमें एक है हमारा ऐप साइड बार then second one is app content, जिसमें हमारा हेडर आएगा एंड देन मेन कंटेंट। हमारा जो साइड बार है उसमें दो पार्ट है। एक है हमारा लोगो एंड देन नैव। इसमें अपने लिस्ट बनाएंगे। देन हमें चाहिए एंकर टैग। जैसा कि भी आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल हमारे स्क्रीन पर कुछ भी नहीं होगा। ओके, फाइनली कुछ विजिबल हुआ। सबसे पहले हम दो पार्ट में जो हमने डिवाइड किया है अपने ऐप को, उसकी स्टाइलिंग करते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ विजिबल हो। इसकी हम पोजीशन रखेंगे फिक्स। क्यों, ये मैं भी बताता हूँ आपको। टॉप 0, लेफ्ट 0। इसकी विड्थ रख लेते हैं 250 पिक्सल। ओके फाइन, 220। एंड देन अपने लोगों के लिए भी हम स्पेस रख लेते हैं। फाइनली यहाँ स्पेस आ गया है ऊपर हमारे लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम अपने लोगो क्लास में लोगो डाल देते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट पड़ा है। देन हम यहाँ नेम में एक टेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, देन हम अपने लोगों की स्टाइलिंग कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो लोगो है और जो टेक्स्ट है लोगो सेकंड लाइन में आ गया है। इसके लिए हम बेटर रहेगा कि हम एक इनलाइन टैग को यूज करें, जो कि अब बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने नैव को नाम दे देते हैं
बाहर। ये हमारे आइटम हो गए अपने नैप के। तो स्ट्रक्चर कर लेते हैं कोड को। हमारा नैप लिंक। अब हमें चाहिए आइकन्स। Okay, so let's use font awesome. ये हो गया हमारा आइकन। बट यहाँ विजिबल नहीं हुआ। यही प्रॉब्लम होती है कभी कभी इसके साथ। ओके, नाउ फाइनली हमारा आइकन यहाँ विजिबल हो गया है। ओके, अब जैसे कि आप देख रहे हैं, सो हम अपनी डैशबोर्ड की स्टाइलिंग करेंगे। अब जैसे कि हमारा साइड बार विजिबल है, सो हम अपने ऐप कंटेंट को भी स्टाइलिंग करते हैं ताकि एटलीस्ट वो विजिबल हो। सो इसकी विड्थ जो है हम रखेंगे 100%। एंड देन हम इसको इतनी ही पैडिंग दे देंगे इतनी कि हमने अपने साइड बार को विड्थ दी है, सो दैट ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट ना करें। बस इसको विजिबल कराने के लिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सो दैट ये इजीली विजिबल हो जाए। हम अपनी ऐप को हाइट भी दे देते हैं। देखिए, अक्सर ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें डैशबोर्ड बनाते हुए आती है। अब जैसे ये जो हमारा साइड बार है, देन ये हमारा ऐप कंटेंट है। ओके, पैडिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है डेफिनेटली। सॉरी, आपके दो चाइल्ड हैं इस पर फ्लेक्स लगा हुआ है। वन इज साइड बार, सेकेंड वन इज ऐप कंटेंट। हमने बैकग्राउंड कलर जो दिया है,
हम अपने साइड पर कोई कलर दे देते हैं। ओके, सेट लिस्ट हमारा साइड पर विजिबल हो गया है। ओके, सो अब हम अपने हम हैमबर्गर आइकन यूज करते हैं। सो एट लीस्ट हम टाइटल देते हैं, आज हम काम कर रहे हैं। सो हम साइड नेम बार क्रिएट कर रहे हैं सो दैट दोनों ही कंटेंट को देखना एटलीस्ट इजी हो जाए, डिफरेंशिएट करना। Let's give it a padding of 10 pixel. Okay, pretty decent, looks good. Now let's style our sidebar too. Okay, so logo, let's add a bit of padding and then now start work on our item so that हमारी spacing कुछ ठीक हो जाए। And then we have nav link जो कि हमारा anchor tag है। इसके अंदर हमारे पास पेन है जिसमें हमारा टेक्स्ट है। ओके, हमारे क्लास दे देते हैं टेक्स्ट। So now we giving it, let's, okay, pretty decent. Okay, nice. Let's increase the size of a font a bit. I don't think this one is working. Let's give it a class of icon. So that we can set. Okay, this is fine. That is working. Now let's add few more items so that it will be bit better. Let's add few common tabs. Analytics, have users,
Sorry. Web settings. We only have logout 2. Okay, fine. Not that bad. We can remove this one for now. Okay, so we need icons too. Okay, fine. Let's add analytics. Let's take this one. We will keep adding this class icon. Okay, then user setting. Okay, then we'll add the class. Now we have settings too. Then we need for logout. Let's say it works. Okay, fine. Now we have the icons. So now I have a few combination of colors. Okay, let's do one thing. Let's add color. Not that bad. What happened to our white color? Okay, this looks good. So now we have logo, our brand name, and then we have 5 items. And this one is, and now we need to remove this. So let's keep it inside this toggle, using it for toggle. So now I'm going to change its cursor to pointer so that it can indicate. Spelling to a little bit. Yes, fine. It is working. And now we need to add. Let's change the color of our nav item. So once over, I want a nav link color to be changed. Background color. I think we can use a shade of blue. It works. I think.
Yep, define. Okay, fine. And then we do need to change so that it looks bit better. Some I have few combination of color. If you want, I can share it with you too. Okay. Now it does look like a dashboard sidebar. So we are pretty much done for the static dashboard. Now time to add bit animation so that once we click on this hamburger, this sidebar will be gone out of this particular screen and it will be, and our right app content will be expand and this one will be removed from here. And for that we do need to write a bit of JS code. So we'll be writing this in the bottom before the body tag close in the script. So we will be writing a function to toggle and we do need a, so we are working on sidebar. So let's take SB. Let's take this hamburger by ID. So now we do need to give it an ID. Okay. Now the thing is we need an ID. So what we will be doing by this, once we click on this hamburger, we will be adding a class on that particular ID, or we can add it in the body. So let's go with the ID. So I'm giving a main class an ID for sidebar toggle. So this is our ID. Okay, once we call this function, we'll get this ID. And now in SB we have this ID. So we're gonna simply add class list dot toggle class. So our ID name is sidebar toggle. Okay, so let's add a class dot sidebar nav. Toggle. Or you can keep it any name as you like. Let's add it here. And let's check if our function is working or not. Okay, so this function will be calling once we click on toggle icon. So let's use the one click event. Okay, so what is happening here? Let me describe in short. Once we click on this hamburger, it will call this function. This function will get this ID that we have given in the to our main app, so that we can add another class
by using this button hamburger icon. Okay, so once we add this class, let's go to our app sidebar. The width of this sidebar is 220, but once we add this class, it will be decreased to, let's say, 50 pixel. Yes. Okay. So now as you can see, our sidebar is getting the high width of it decreased, but our right content is still the same. And as you can see, our nav item text is still visible once we decrease the height to 50 pixel. So let's get rid of that too. So once we add this class, our text will be gone so that it won't create any issue. And then our app content width is 100% while padding is 220. So we will be decreasing this padding to same as the width of this sidebar. We can also add transition. Let's do it. Just okay. So now you can see this one is working fine. So why we took, so let's discuss the structure of our application. The things will be more clear. So in body, we have one class app, that is our main class to create for our whole application, and it has two child. There's no need for the flags. Okay, it has two child, that is one is app sidebar and then is app content. So once we set the position to fix, so its z-index will be, so it gets a layer up so that app content can take the whole space or whole screen. That's why I set it. So now app sidebar is on above. See, so that was all pretty much to cover. I hope you like it. Thanks.